गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ राइजिंग एब्सटेंशंस एट द यूनाइटेड नेशंस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट एनालिसिस हुआ है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का, जिसमें देखा गया कि इंडिया जो है उसने कैसे वोट किया है 1946 से लेके 2025 तक। और इसमें देखने को मिला है कि एनुअल परसेंटेज ऑफ येस वोट्स जो हैं वो कम हो रही हैं 56% से 56% पर पहुंच चुकी हैं, जो कि लोएस्ट है सिंस 1955। तो जो शेयर ऑफ एब्सटेंशंस हैं वो ऑल टाइम हाई पर है 2025 में। और एनालिसिस किया गया है लगभग 5500 रेजोल्यूशंस का, जो 1946 से लेकर 2025 के बीच में यूएन में इंट्रोड्यूस हुए। इसमें रिवील किया गया है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ येस वोट्स हैं इंडिया का वो फॉल हुआ है टू 56%, और एब्सटेंशंस जो है वो 44% से बढ़े हैं, 44% तक बढ़े हैं। तो एक स्ट्रेटजिक रिकैलिब्रेशन है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में ये। तो अगर हम देखें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स 1946 से 1960s तक लेकर वोटिंग पैटर्न्स बहुत वॉलेटाइल थे। येस वोट्स जो हैं 20 से 70%, 20 से 100% के बीच में स्विंग करते थे। 1970 से 1994 के बीच में ज़्यादा ग्रेटर जो है वो कंसिस्टेंसी आई, येस वोट्स ज़्यादा रहे। मिड 1990 से 2019 तक जो है वो येस वोट्स ही प्रेडोमिनेंटली रहे। लेकिन 2019 के बाद से जो एब्सटेंशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ गई और येस वोट जो है वो डिक्लाइन होने लगे। तो अब रीजंस क्या है इसके पीछे? जो कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन है काफ़ी ज़्यादा मेजर पावर्स के बीच में ग्लोबल सिस्टम में, तो इसलिए कोई इंसेंटिव नहीं है कंसेंसस बिल्डिंग करने में। मॉडर्न रेजोल्यूशन जो है वो क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, मतलब मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को बंडल कर दिया जाता है टुगेदर। और ये स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये डिफ़िकल्ट बना देती है इंडिया के लिए कि वो किसी भी एक रेजोल्यूशन को फुली इंडोर्स या रिजेक्ट करे। एब्सटेंशन जो है वो इंक्रीजिंगली देखी जा रही है नॉट एज एन इंडिसीजन, बल्कि एक सोवरेन डिप्लोमेटिक जजमेंट। ठीक है, तो मिडल पावर्स जैसे इंडिया एब्सटेंशंस को एक तरह से यूज़फुल टूल की तरह यूज़ करती हैं नेविगेट करने के लिए कंटेंशियस इश्यूज़, अपनी स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन कर पाती हैं। तो ज़्यादा एब्सटेन करने की वजह से इंडिया सिग्नल कर रहा है अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम बाइनरी कोल्ड वॉर स्टाइल अलाइनमेंट्स। और इंडिया एम्बिग्विटी और जो है इसकी वजह से जो है, लेकिन पॉस्चरिंग से एम्बिग्विटी आएगी या डिसअपॉइंटमेंट आएगी अमंग अलाइज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडिया को एक फाइन लाइन वॉक करनी होगी अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने में और अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में। तो एक इंडिया के जो एक्सटेंशन है वो मोस्टली अगर हम देखें तो कंटेंशियस इश्यूज़ पर ही रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जो रेजोल्यूशंस थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुई हैं म्यांमार या चाइना में, वोट्स जिसमें कि इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट्स हैं। तो इंडिया ने एब्सटेंशंस को यूज़ किया है अपने की पार्टनर्स को एलिनेट करने से अवॉइड करने को। तो इंडिया का जो शिफ्ट है ये स्ट्रेटजिक एब्सटेंशन की तरफ ये कंटिन्यू रहेगा। इंडिया अपना रोल एज अ बैलेंसिंग पावर निभा रहा है और न्यूएंस डिप्लोमेसी के थ्रू ये करता रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्मीज़ एआई रोड मैप। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने एक फॉर्मुलेट किया है कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप इंटीग्रेट करने के लिए एआई को, मशीन लर्निंग को और बिग डेटा एनालिटिक्स को बाय 2026-27। अब की फोकस एरियाज इसमें क्या रहेंगे? ड्रोन स्वार्मिंग, रियल टाइम बैटलफील्ड सर्वेलेंस, कॉम्बैट सिमुलेशंस फॉर ट्रूप ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? एआई से जो है वो बैटलफील्ड एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग स्पीड अप होता है। ऑटोनॉमस सिस्टम्स जो हैं वो रेपिटेटिव या फिर डेंजरस टास्क को बिना किसी फटीग के हैंडल कर पाते हैं। एआई ड्रिवन ड्रोन्स और रोबोट्स जो हैं वो हाई ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। एआई प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर जो हैं वो काफ़ी चीप होते हैं और ईजियर टू स्केल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम्स। एआई एनहेंस्ड टारगेटिंग जो है वो स्ट्राइक एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ करती है और सिविलियन कैजुअलिटीज़ को भी अवॉइड करने में हेल्प करती है। और एडवर्सरीज भी इससे डिटर होंगे और कॉम्प्लेक्स वॉर सिनेरियोज़ को सिमुलेट करना भी ईजी हो जाता है। लेकिन कुछ मेजर रिस्क भी हैं, जैसे ऑटोनॉमस सिस्टम्स जो हैं वो मशीन स्पीड पे काम करते हैं, तो अनइंटेंडेड कन्फ्लिक्ट भी जो है ट्रिगर कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स जो है वो स्पूफ या हैक भी किए जा सकते हैं। एआई एरर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में उससे रॉन्गफुल टारगेटिंग या सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हो सकती है। एआई को अगर बायस डेटा पर ट्रेन किया गया है तो वो डिस्क्रिमिनेट और मिस आइडेंटिफाई कर सकता है टारगेट्स को। एक ग्लोबल एआई आर्म्स रेस अगर शुरू हो गई तो उससे डिप्लॉयमेंट्स, एक्सीडेंट्स, हाइटन टेंशंस की स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है वो एक एम्बिशियस रोड मैप लेकर चल रही है कि एआई
मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स को अपने ऑपरेशंस में 2026-27 तक लेकर आएगी। ये प्लान एम कर रहा है बैटलफील्ड अवेयरनेस एनहेंस करने को, स्पीड अप करने को डिसीजन मेकिंग को, और मॉडर्नाइज करने को मिलिट्री फंक्शनिंग को। ठीक है, तो इससे रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस जो है इंडियन आर्मी अपनी इम्प्रूव करना चाहती है यूजिंग AI टूल्स। टैक्टिकल ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो AI यूज़ के जो है वो एक रोड मैप के थ्रू बनाए जा रहे हैं। AI के फीचर्स जो है वो एम्बेड किए जाएंगे जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में, जो कि टेक्निकल बेंचमार्क्स होंगे अपने सभी न्यू इक्विपमेंट के लिए। आर्मी जो है वो रेट्रोफिट करना चाहते हैं AI को भी कुछ सेलेक्ट लेगेसी प्लेटफॉर्म्स में भी। एक AI टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंडर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाई फूड इन्फ्लेशन में रिमेन लो। टॉपिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 2.1% पर पहुंच चुका है जून में, जो कि 2019 से लेकर अभी तक का सबसे कम इन्फ्लेशन का फिगर है। और ये एज़ कम्पेयर टू हम US और UK देखें तो ये जो फूड इन्फ्लेशन भी है इंडिया में है वो सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तो RBI को काफ़ी रिलीफ है इस चीज़ से। अब फूड इन्फ्लेशन क्या होती है? फूड इन्फ्लेशन का मतलब कि रेट एट विच फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में। इसको मोस्टली हम ईयर ऑन ईयर ही मेजर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसको CPI के थ्रू मेजर करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। तो इसमें एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट और एडिबल ऑयल्स कवर किए जाते हैं। तो अबंडेंट रेनफॉल हुई है 2024 के मानसून सीज़न में, और इस साल भी ऑफ कोर्स अच्छी रेनफॉल हो रही है। तो उसकी वजह से जो वीट स्टॉक हैं गवर्नमेंट गोडाउंस में वो 4 ईयर हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड हाई राइस स्टॉक्स भी हैं गवर्नमेंट के पास। तो इंडिया एक कंफर्टेबल सीरियल सप्लाई पोजीशन पर है। गवर्नमेंट के पास एम्पल रिजर्व्स होने की वजह से वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी सपोर्ट कर सकती है और इंटरवेन भी कर सकती है मार्केट में अगर प्राइस कंट्रोल करने हो। 2025 का भी मानसून जो है वो एक रिलीफ लेकर आया है। और जो है लेकिन कुछ जो है पल्सेस की जो प्रोडक्शन में डिप आया है ये लेकिन क्यों हुआ है? क्योंकि लो मार्केट प्राइसेस हैं, पेस्ट के कंसर्न्स हैं, और फार्मर्स जो है वो धीरे धीरे मेज़ की तरफ मूव हो रहे हैं जो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, और पल्सेस और ऑयल सीड से वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से जो है फिर भी कंट्रोल रहेगी डिस्पाइट रिड्यूस्ड प्लांटिंग। गवर्नमेंट ने ज़ीरो ड्यूटी इम्पोर्ट्स जो है वो अलाउ कर दिए हैं पल्सेस के मार्च 2026 तक। 2025 का मानसून जो है वो बूस्ट कर रहा है अर्ली खरीफ सोइंग, लेकिन अभी भी थ्रेट है कि ये हो सकता है कि वीकन हो जाए आगे, और एक ग्रोइंग फर्टिलाइज़र शॉर्टफॉल भी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना जो है उसने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं यूरिया के ऊपर। तो अभी अनसर्टेनिटी है कि कैसे आगे जो है आने वाला टाइम जो है मानसून का परफॉर्म करेगा, और फर्टिलाइज़र शॉर्टेज जो है जो या उसके प्राइसेस जो हैं अभी हाई चल रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा क्रॉप यील्ड्स पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तुवालू। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, जो रेजिडेंट्स को ऑफर करेंगे तुवालू के कि वो वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को एस्केप कर सके। तुवालू को हम पहले एलिस आइलैंड्स कहते थे। ये एक आइलैंड कंट्री है, लोकेटेड है मिडवे बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया, और इसके नेबर्स हैं किरिबाती और फिजी। 9 आइलैंड्स हैं, सभी के सभी लो लाइंग आइलैंड्स हैं, और ये फ्यूचर सी लेवल राइज से थ्रेटन्ड है। कोई रिवर्स नहीं है यहाँ पर, हॉट और रेनी क्लाइमेट है, और बहुत ही कम इन्हेबिटेंट्स रहते हैं यहाँ पर। मोस्ट पीपल जो है तुवालुआन लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत कॉमन है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं। तुवालू जो है UK से अलग हुआ 1978 में, लेकिन अभी भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर से चूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिकनगुनिया। ये टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है सोशल इश्यूज़ के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो चाइना में एक रीसेंट इमरजेंसी कैंपेन चलाया जा रहा है सबको सेफ गार्ड करने के लिए जो चिकनगुनिया से के रिस्क पर है। चिकनगुनिया एक मस्कीटो बॉर्न वायरल डिसीज़ है, चिकनगुनिया वायरस से होती है। फीवर और सिवियर जॉइंट पेन होता है इसमें। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था सदर्न तंजानिया में 1952 में जब ये हुआ था।
और लगभग 110 कंट्रीज़ में रिपोर्ट किया जा चुका है तब से। ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में ये बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटोज़, और बाकी की 2 स्पीशीज़ और भी पाई गई हैं जो डेंगी और ज़ीका वायरसेस ट्रांसमिट करती हैं, वो भी इसको ट्रांसमिट कर पाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? ज़ीका और डेंगी जैसे ही होते हैं, ऑनसेट ऑफ फीवर, फिर जॉइंट पेन होना। कभी कभी इसमें जॉइंट पेन जो है वो कई बार सालों तक रह जाता है, ठीक है। कोई वैक्सीन या कोई एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सिम्टम्स पर ही को रिलीव करने में ही फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेडॉइंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 लोगों की जो है वो डेथ हुई है वायलेंट क्लैशेस बिटवीन सीरियाज ड्रूज मिनॉरिटी एंड सुन्नी बेडॉइन ट्राइब्स। तो ये बेडॉइंस कौन है? ट्रेडिशनली नोमैडिक अरेबिक स्पीकिंग ट्राइब्स हैं जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सेंचुरीज से रह रही हैं। ये हिस्टोरिकली सर्वाइव करती हैं हर्ड करके लाइफ स्टॉक को, प्राइमरीली कैमल, शीप और गोट। बेडॉइंस जो है वो प्राइमरीली सीरिया में अल्बाडिया डेजर्ट के पास रहते हैं। बेडॉइन सोसाइटी ट्राइबल और पैट्रियार्कल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्विक्टस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूके बेस्ड फ्रेजर नैश ने किक ऑफ किया है इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम, जिसका गोल है डेवलप करना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ जो कि फ्यूचर रीयूजेबल व्हीकल्स में यूज़ हो सके हॉरिजॉन्टल लॉन्च करने के लिए। तो एक फुली रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल एरोस्पेस व्हीकल है जिसकी फ्लाइंग स्पीड मैक 5 है। डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है ये व्हीकल की टेक्नोलॉजीज़ सस्टेन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट इन द एटमॉस्फेयर के लिए। तो इन्वेक्टस प्रोग्राम जो है वो प्रूव करेगा अपनी सूटेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्ड प्री कूल्ड एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम फॉर हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's rising abstentions at the UN. This topic is important for your international relations. So a recent analysis of different resolutions of United Nations that India voted on between 1946 and June 2025 has showed that annual percentage of yes votes by India has fallen to 56%, which is the lowest since 1955. So India's share of abstentions have touched an all-time high in 2025. An analysis of over 5,500 resolutions have been made between 1946 and June 2025, which has revealed that the proportion of yes votes by India has fallen to 56%, which is the lowest since 1955, while abstentions have surged to 44%. This shift marks a strategic recalibration in India's foreign policy. So, if we look at the historical trends in India's UN voting, since 1946 to late 1960s, voting patterns were highly volatile, with yes votes swinging from 20% to 100% and abstentions ranging from 0% to 40%. Between 1970 to 1994, this era saw greater consistency with yes votes between 74% to and 96%. Between mid 1990s to 2019, India's voting behavior became even more stable with yes votes between 75% and 83% and abstentions between 10% and 17%. Post 2019, there was a marked shift which saw increased abstentions and declining yes votes. Okay, and it has recorded a 44% abstention rate in 2025. Why is this happening? So, former Indian envoy to UN has attributed this shift to intensifying polarization between major powers in the global system, which has reduced incentives for consensus building. Experts are also noting that modern resolutions often resemble Christmas tree with multiple, sometimes conflicting provisions bundled together, and this structural complexity makes it difficult for India to fully endorse or reject a resolution. Abstentions is increasingly seen not as an indecision but as an assertion of sovereign diplomatic judgment. Experts have also highlighted that for middle powers like India, abstentions are a useful tool to navigate contentious issues while maintaining strategic flexibility. So, by abstaining more often, India signals its independence from binary Cold War style alignments. Okay, but this posture may lead to ambiguity or disappointment among allies expecting stronger support. India must walk a fine line between preserving strategic autonomy and protecting its credibility as a responsible global actor. India's abstentions in recent years have often involved contentious issues like resolutions on the Russia Ukraine conflict, human rights violations in Myanmar or China,
votes involving Israel-Palestine disputes. So in each case, India has used abstentions to avoid alienating key partners. So India's shift towards strategic abstention is likely to continue, and as global tensions rise, India's role as a balancing power may increasingly rely on such nuanced diplomacy. Okay. So the next topic is Army's AI roadmap. This topic is important for your security section. Indian Army has formulated a comprehensive roadmap to integrate AI, machine learning, and big data analytics by 2026-27. The key focus areas include drone swarming, real-time battlefield surveillance, combat simulations for troop training, information warfare, and data-driven decision making. So AI speeds up battlefield analysis and decision making. Autonomous systems also handle repetitive or dangerous tasks without fatigue. So, what are the other benefits? AI driven drones and robots can perform high risk operations. AI platforms, particularly drones and software, they are often cheaper and easier to scale than traditional systems. AI enhanced targeting may also increase strike accuracy and help avoid civilian casualties. Advanced AI capabilities can even deter adversaries and simulate complex war scenarios. But still, there are major risks of military AI. What are them? So, what are they? So, autonomous systems may act as machines at machine speed, triggering unintended conflict. AI systems can also be spoofed or hacked. AI errors in complex environments may result in wrongful targeting of civilian casualties. AI trained on flawed or biased data may discriminate, misidentify targets, or be misused for domestic repression and unlawful killings as well. A global AI arms race could lead to rushed deployments, accidents, and heightened tensions. So, Indian Army has drawn up an ambitious plan to integrate AI, machine learning, and big data analytics into its operations by 2026-27. The plan is to enhance battlefield awareness, speed up decision making, and modernize various facets of military functioning from combat to logistics. One of the key priorities is to improve the real time battlefield awareness using AI tools. There is also a roadmap which outlines tactical, uh, operational, and strategic objectives for AI use. To ensure long term integration, AI features will be embedded in the general staff qualitative requirements, basically the technical benchmarks for all new equipment. The Army is also planning to retrofit AI into select legacy platforms. And even an AI task force has been constituted under the Directorate General of Information Systems. Okay. So the next topic is why food inflation may remain low. This topic is important for your economy section. So India's consumer price index inflation fell to 2.1% in June, lower than the US and UK. This gap was even more notable in food inflation, with India recording a decline of 1.1%. So this marks the lowest retail and food inflation since 2019 January. This turnaround was driven by a surplus monsoon in 2024. So, food inflation in India refers to the rate at which food prices of food items increase over a specific period, typically measured over typically measured year on year. So it is measured by Ministry of Statistics and Program Implementation through the CPI. It covers essential food items like cereals, pulses, vegetables, fruits, milk, eggs, meat, and edible oils. So, thanks to abundant rainfall during 2024 monsoon season, which was 7.6% above normal, favorable soil moisture and improved water reserves have led to strong wheat harvest. Wheat stocks in government godowns are at a 4-year high. It is also coupled by record high rice stocks, which has placed India in a comfortable cereal supply position. Government now has ample reserves to support the public distribution system and intervene in the market to control prices also. The 2025 monsoon has also brought much needed relief. Most regions have received above normal rain, but the pulses and oilseeds production has declined because of low market prices and pest concerns. Farmers are also shifting acreage to maize, which is now more profitable. But despite a reduced planting in some pulses and oilseeds, food inflation is going to remain under control thanks to record imports, because government has extended zero duty imports on key pulses till March 2026. While 2025 monsoon is good, it has the potential to weaken, and there is also a problem of growing fertilizer shortfall. This decline is due to reduced imports, especially from China, which has imposed export restrictions. So this uncertainty about fertilizer shortage and
potential weakening of the monsoon system could affect crop yields, but still it adds a layer of risk to an otherwise promised agricultural season. So the next topic is Tuvalu. This topic is important for your international relations. So more than 5,000 people have applied for a first of its kind migration visa, which offers residents of Tuvalu an escape from the worst effects of climate change. So Tuvalu is an island country located midway between Hawaii and Australia. Its neighbors include Kiribati to the north and Fiji to the south. It comprises of 9 islands. All islands are low-lying, and these islands are threatened by any future sea level rise. There are no rivers. Tuvalu's climate is hot and rainy. With the exception of a tiny Vatican City, Tuvalu has the fewest inhabitants of any other independent nations. Most people speak a language called Tuvaluan. English is also common. Most people are subsistence farmers. Tuvalu became independent from the UK in October 1978. It operates as a parliamentary democracy under a constitutional monarchy. It is part of the Commonwealth realm. There are no political parties, and the Prime Minister is chosen by from the legislature. So the next topic is chikungunya. This topic is important for your social issues. So Ministry of Health in China has recently initiated an emergency campaign to safeguard those at risk of chikungunya fever illness. Chikungunya is a mosquito-borne viral disease caused by chikungunya virus. It causes fever and severe joint pain. It was first described during an outbreak in southern Tanzania in 1952, and it has now been reported in more than 110 countries in Asia, Africa, America, and Europe. So it is transmitted to humans by the bites of infected female mosquitoes, but there are 2 other species also which can transmit this other viruses, including dengue and Zika viruses. The symptoms are similar to those of dengue and Zika. There is also onset of fever, often accompanied by joint pain. Severe joint pain usually lasts a few days, but it can persist for months or even years. Currently, there is no vaccine or antiviral drug treatment for it, and treatment is focused on relieving the symptoms only. So the next topic is Bedouins. This topic is important for your social issues. Over 300 people have been killed in a week of violent clashes between Syria's Druze minority and Sunni Bedouin tribes in and around the southern city of Sweda. So Bedouins are traditionally nomadic Arabic speaking tribes who have inhabited the deserts of the Middle East and North Africa for centuries. These communities historically survived by herding livestock, primarily camels, sheep, and goats. So in Syria, Bedouins have primarily lived in the expansive Al Badia desert. So Bedouin society is tribal and patriarchal. So the next topic is Invictus. This topic is important for your science and tech section. Recently, European Space Agency and UK-based Fraser Nash have kicked off Invictus research program. So it's a research program with the goal of developing hypersonic technologies applicable for future reusable vehicles capable of horizontal launch. So this Invictus is a fully reusable experimental aerospace vehicle capable of flying at Mach 5. The vehicle will demonstrate key technologies for sustained hypersonic flight in the atmosphere. This Invictus program will prove the suitability of a hydrogen-fueled pre-cooled air-breathing propulsion system for horizontal takeoff and hypersonic flight. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.